Dear viewers, welcome back to our channel हर दिन की बात. Hope you all are doing well. B.Ed Internship Manual सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं How to write high school और higher secondary portion of your internship manual. आप अपनी internship manual में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी पोर्शन कैसे फिल करेंगे, इसके रिगार्डिंग आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे. तो सभी ऑब्जर्वेशंस के रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें. और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. लेट अस स्टार्ट. B.Ed गाइडलाइंस के मुताबिक आपको हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी इन दो में से एक जगह विजिट करके ऑब्जर्वेशंस करनी थी. तो आज के इस वीडियो में हम हायर सेकेंडरी की ऑब्जर्वेशंस आपके सामने लाएंगे. ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले है नेम ऑफ द टीचर, उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर है टॉपिक, उसके बाद डेट, टाइम, ड्यूरेशन, फिर है जनरल एम. जनरल एम में हमने लिखा है टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट है स्पेसिफिक एम. Students should be able to identify different types of real numbers and perform operations on them. फिर है टीचिंग मटेरियल और एड, वाइट बोर्ड, मार्कर, नंबर लाइन चार्ट. फिर है प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर्स, explanation of different types of numbers, examples of each type of numbers with visual aids, discussion on the properties of real numbers and perform operations. Next है motivation, started with a question, what type of numbers do you encounter daily, and encouraged students to share examples. Checking of previous knowledge, asked students to define different types of numbers. Blackboard summary, definition of real numbers, types of real numbers. Next है response of students. Students actively participated by providing examples and answering questions about different types of numbers. Next है recapitulation, summarized the key types of real numbers. फिर है evaluation, asked students to solve different problems on real numbers. Next है home assignment, complete worksheet exercises involving identification and operations on various real numbers. Overall remarks or observation, students were enthusiastic about sharing their examples and the use of visual aids helped clarify the concepts. Some students may need additional practice with irrational numbers. ये थी ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ऑफ हायर सेकेंडरी पार्ट. तो इसमें आप एक बार फिर से ये चेक कर सकते हैं, आप ये एज सच अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं. सब्जेक्ट से आप ये सारा कुछ अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट कर सकते हैं. अब बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 2 की तरफ. ऑब्जर्वेशन नंबर 2, सब्जेक्ट zoology, टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, डेट, टाइम, ड्यूरेशन. उसके बाद है जनरल एम, to provide students with an understanding of the structure and function of human digestive system. Specific aim, students should be able to explain organs involved in digestion and understand absorption as well. Next है teaching or material aid, whiteboard, marker, demonstration board, 3D model. Next है presentation, introduction to human digestive system and its importance in breaking down the food and absorbing nutrients. Explanation of each organ involved, role of enzymes in digestion and absorption. Next है motivation, asked students what happens to the food they eat. Checking of previous knowledge, asked questions about organ system. Blackboard summary, organs of digestive system, enzymes involved and absorption. Response of the students. Students showed curiosity about how different foods are digested and the importance of absorption. फिर है recapitulation, teacher reviewed the structure and key functions. Next है evaluation, teacher asked students to label a diagram of digestive system. Next है home assignment, draw a labeled diagram of digestive system. Last में है overall remarks of observation. The class was interactive and engaged well with the topic. Visual aids helped in understanding the structure and function of digestive system. Students were very keen and attentive during the lesson.
स्टार्ट से फिर से आपको दिखाते हैं ताकि आप अपनी कॉपीज़ में ये नोट कर सकें। सब्जेक्ट ज़ूलॉजी, टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से आप ये अपनी कॉपीज़ में ऐसे ही नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 3 की तरफ। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, सब्जेक्ट एनवायरनमेंट साइंस, टॉपिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, डेट टाइम एंड ड्यूरेशन आप खुद अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। फिर है जनरल एम, टू क्रिएट अवेयरनेस among students about the importance of wildlife conservation. Specific aim, students should be able to explain the significance of wildlife conservation, understand the threats to wildlife, and learn about conservation strategies. Teaching material or aid, whiteboard, posters, and charts of endangered species. Presentation, introduction to wildlife conservation and its importance in biodiversity and ecological balance. Discussion on the threats to wildlife, such as habitat destruction, poaching, and climate change. Motivation, asked students why protecting animals and their habitat is crucial. Checking of previous knowledge, asked students if they know about any endangered species. Blackboard summary, wildlife conservation, importance, threats, and conservation strategies. Response of the students, students expressed interest and shared their knowledge about endangered species and conservation efforts in their communities. Recapitulation, summarized the need for wildlife conservation. Evaluation, oral questions about threats to wildlife. Home assignment, write an essay on the role of national parks and sanctuaries in wildlife conservation. Last में है oral remarks of observation. The lesson was well received with active participation from students. Conservation strategies and their importance was discussed. Role of the students in protecting wildlife was discussed. Overall, the class was very attentive and engaging. ये थी ऑब्जर्वेशन नंबर 3 ऑफ हायर सेकेंडरी पोर्शन। एक बार फिर से आपको स्टार्ट से दिखाते हैं ताकि आप अपनी कॉपीज़ में ये नोट कर सकें। तो ये थी 3 ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग हायर सेकेंडरी पोर्शन ऑफ योर बीएड इंटर्नशिप मैनुअल। आप इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को एज सच अपनी कॉपी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारी चैनल पे नया है और अभी तक उसने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं रिगार्डिंग बीएड इंटर्नशिप मैनुअल, तो वो वीडियो के एंड में आई बटन पे क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आपको अपनी कॉपीज़ मेंटेन करनी है, या आप हूबहू हमारा ही कॉपी कर सकते हैं। आगे भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हर दिन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।